जी अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द आइसोलेशन सेंट्रल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है मिड मार्च से ये शो चलाते आ रहे हैं, जिस पे हम मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के हवाले से बात कर रहे हैं। स्पेशली अब इस पेंडेमिक से हम गुजर रहे हैं। इस सिलसिले में आप लोगों को याद होगा कि कुछ एपिसोड्स पहले हमने डॉक्टर ताहिर मुनीर साहब से रिक्वेस्ट की थी और हमारे शो पे आए थे, और हमने उनसे काफ़ी सेर हासिल गुफ्तगू की थी, जिस पे हमने बात की थी यूथ के हवाले से, यंग पेरेंट्स के हवाले से, और वो शो आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था। सो इसलिए हमने डॉक्टर ताहिर साहब से दोबारा रिक्वेस्ट की कि वो आज आएँ, और आज हम जो स्पेसिफिकली जिस एज सेगमेंट की बात कर रहे हैं वो यंग बच्चों की बात कर रहे हैं, स्कूल गोइंग किड्स की बात कर रहे हैं। बट बिफोर गोइंग देयर, आई विल हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर ताहिर साहब। ही इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड फेलो ऑफ अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन। इसके अलावा वो अडल्ट, चाइल्ड और एडोलसेंट साइकियाट्री की प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडियाना में। So सबसे पहले सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। Assalamu alaikum. It's a pleasure for me to be here again. इस दफ़ा जो हमारा शो का फॉर्मेट आमतौर पे ही होता है कि मैं क्वेश्चंस पूछ रहा होता हूँ, बट आज मुझे ये एहसास हुआ कि जिस सेगमेंट में क्वेश्चंस पूछने हैं उसके लिए मैं क्लियरली क्वालिफाई नहीं करता, सो आई शुड नॉट बी द वन आस्किंग क्वेश्चंस। सो इसलिए हमने अपनी एक यंग दोस्त नूर को इनवाइट किया है आज शो पे कि वो आएँ और आके जो है वो क्वेश्चंस पूछेंगी। उनके दोस्तों के माइंड में जो क्वेश्चंस हैं, उनके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं, स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ इन कोविड-19 के हवाले से। बट बिफोर आई हैंड इट ओवर टू नूर, मैं डॉक्टर साहब आपसे बात जानना चाहूँगा कि लास्ट टाइम जब हमने कन्वर्सेशन की थी, तब से अब तक, तब आपने बार-बार ज़िक्र किया था कि एक मेंटल हेल्थ क्राइसिस इवेंचुअली आएगा, 2-3 महीनों बाद हमें नज़र आना शुरू होगा। तो अब आप उसको किस तरह देख रहे हैं? अब हम आपके पास जो इस टाइम केसेज़ आ रहे हैं, जो आप जनरल हालात देख रहे हैं, वो किस तरह चल रहा है इस टाइम? Bismillahirrahmanirrahim. So first of all, it's again a pleasure, कि I'm here to talk to all of you. And कि March में जब when we met for the first time, उस वक्त basically things were just starting. तो उसी तरह जैसा मतलब as we think about कि कोई चीज़ start होती है, अगर अच्छी चीज़ हो तो we want this to continue. That's about human nature. लेकिन जो चीज़ stressful हो, जिससे हमारी जिंदगी limit हो, we want to be over with that. Anything painful, anything that we don't like. तो उसमें हुआ ये कि उस वक्त शुरू में जो इनिशियल फेज थी इन पाकिस्तान टू, जब मैं पाकिस्तान में बात करता हूँ फैमिली से, दोस्तों से, और यहाँ पे भी मतलब अगेन द ह्यूमन रिस्पांस वाज द सेम। तो इनिशियली लोगों का ख्याल था, शॉक था इनिशियली कि वो ये क्या हो गया, हम पहले सुन रहे थे चाइना में है, यहाँ पे अब यहाँ पे आ गए। तो इनिशियल स्टेज ऑफ शॉक थी। उसके बाद एक स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस थी कि आप कहते हैं अच्छा चलो ठीक है हो जाएगा। कुछ लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि इतनी चलो महीने की बात है होगा। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हुआ ईद के टाइम पे जब सारा when we were talking about कि political decision था कि क्या decision economy के लिए था, so it kind of opened up, everyone thought कि ये this thing is over, ठीक है। तो वो पाकिस्तान में तो ये हुआ कि लोगों ने इस चीज़ को इस तरह कॉन्सेप्ट देखा कि ये चीज़ खत्म होगी। यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे भी काफ़ी पुश थी इकोनॉमी खोलने की, काफ़ी स्टेट्स ने फेजेस में कि भाई फेज 1 फेज 2 के इतने लोग बाहर जा सकते हैं, इतने लोग रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, इतने वो कर सकते हैं। तो करते करते वो भी सिलसिला हुआ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ईज आउट हुआ कि लोगों को लगा जैसे ये चीज़ खत्म हो रही है, ठीक। लेकिन अंडरटोन उसकी ये थी कि ये चीज़ बढ़ रही थी और सबको पता था कि बढ़ रही। पाकिस्तान में भी अब जैसा अल्लाह माफ़ करे एकदम तेज़ी से केसेस ऊपर आने शुरू हो गए, 3 to 4 वीक्स उसका टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे भी तो अब वाकई जो काफ़ी लोग इस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे या डिनाइल में थे या उनका ख्याल था ऑप्टिमिस्ट थे कि भाई ये चीज़ खत्म हो जाएगी, अब उनको ये चीज़ हिट कर रही है। दैट्स व्हाट आई वाज referring to मार्च में कि अगर हमने इस चीज़ को रिसीव ना किया अभी, तो by the time we get into 3 to 4 month window, it's gonna start really spiking up, in form of stress for all of us. तो वही हुआ है। वहाँ पे भी मैं बात करता हूँ, people are getting frustrated कि क्यों नहीं हो रहा लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, उसकी वजह से लोग हो रहे हैं। यहाँ पे भी लोग काफ़ी जो है अब लोगों को एहसास होना शुरू है कि ये चीज़ खत्म नहीं हो रही। तो अनफॉर्चुनेटली कि अब जो स्पाइक बन रही है वो ऑब्वियसली फिजिकल हेल्थ और सेफ्टी के लिहाज से प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, मास्क पहन रहे हैं एज मच एज वी कैन। लेकिन जो मेंटल ट्रॉमा है, जो मेंटल स्ट्रेस है, नाउ दैट इज बिल्डिंग अप। So that was what I was referring to. We have to be careful. And now we are 3 months, window into it. ठीक है सर। अच्छा, आज का जो बेसिकली हमारा जो टॉपिक था उसमें मकसद था कि बच्चों के माइंड में काफ़ी क्वेश्चंस चल रहे हैं,
और वो भी आई एम श्योर अपने हर एज ग्रुप, हर एज सेगमेंट अपने तौर पर स्ट्रगल कर रहा है। कुछ चीज़ों को समझ आ रही हैं, समटाइम्स दे डोंट नो हाउ टू प्रोसेस इट, या एक ऐसी सिचुएशन में हेल्पलेसनेस होती है। सो इस सिलसिले में नूर के पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। सो नूर बच्चे, ओवर टू यू। Assalamu alaikum, मेरा नाम नूर है, I'm 13 years old. I'm going to be going into 8th grade. My first question is, how do I try to escape from anxiety right before anything that involves an audience? So first of all, Nur, I really appreciate that at that young age you had that courage, or you're taking that role of representing so many other young people your age group. So when you talk about audience, क्या आप कह रहे हैं कि जब आपने कोई performance करनी है, कोई speech contest है या किसी भी चीज़ में जिसमें के काफी ज़्यादा लोग वहाँ पे होंगे. So first of all, I would like to understand कि anxiety क्या है, ठीक है? Anxiety basically it's a natural thing and we all have it. ठीक है, नंबर वन आपको ये you have to understand ताकि आपको पता लगे कि ऑडियंस के सामने एंजाइटी को क्या हो रहा है. कि एंजाइटी की अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा आपके लिए कि एक एंजाइटी को आप समझ लें which is called functional anxiety. फंक्शनल एंजाइटी ऐसी है कि जो आपको फंक्शनल रखती है, आपको ऑपरेट करने देती है डे टू डे आपकी जो रूटीन है. फॉर इंस्टेंस कि अगर आपका ट्यूसडे को एक टेस्ट है and you have to be prepared for that, if you're not going to start preparing 2 days 3 days ahead of time, that is going to be a very bad outcome. Anxiety आपकी बहुत बुरी होगी क्योंकि जब आप टेस्ट पे पहुंचेंगे आपने कोई तैयारी की, तो that anxiety that you have to prepare for your test is important. It's functional. Same time अगर आपकी 8 बजे की फ्लाइट है, आपने एयरपोर्ट पहुंचना है, 8 बजे की फ्लाइट है, अगर आप 7:30 घर पे नाश्ता कर रहे हैं और आपको पता है कि आप ना एयरपोर्ट टाइम पे पहुंच सकें, आपकी फ्लाइट मिस होगी, so that anxiety is needed. इसको हम कहते हैं functional anxiety. फिर दूसरी एंजाइटी जो है, जो कि which we call as pathological anxiety, जो कि anxiety is too much that you can keep up with, that becomes a problem for everyone, हो adult हो, child हो, किसी भी situation में. उसमें अब आपने देखना है ऐसे कि if I give you a kind of a vision के we have to control our anxiety, but when anxiety controls us it becomes difficult to do anything. ठीक है, वो anxiety different stages में आती है, different चीज़ों में आएगी. बाज़ लोगों को simple anxiety होती है, किसी से मिलना, social gathering में, वो they avoid to go to a function जहाँ पे लोग हों जिनको वो जानते ना हो, so they are very comfortable with 2 or 3 people they know, but they cannot be comfortable more than that group of people. So कुछ लोगों को एंजाइटी होती है किसी चीज़ के चेंज होने से, वो उनको हर चीज़ एक फॉर्मेट में चाहिए, अगर वो चेंज हो जाए तो दैट मेक्स देम वेरी अनईजी. जब ऑडियंस की बात आती है, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल, दैट इज जनरेटिंग अ लॉट ऑफ एंजाइटी बिकॉज यू आर प्रेजेंटिंग टू 100 people, 200, 500, depending on how big the audience is. अब उसकी जो बेसिकली सिंपल चीज़ें हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें कि आपने जब परफॉर्मेंस आपने करनी है, उससे पहले obviously you need to practice. Practice. That is one thing that you have to definitely do. That will make it easy for you to be present and do what you are really trying to do. Number one. Number two, refine yourself in a way, क्योंकि जिस तरह बहुत जो अच्छे speakers आप देखते हो कि आप उनको follow करते हो social media पे, कोई religious speaker हो गया, political speaker हो गया, they also go through that process of training because they refine themselves by doing it over and over again. जिस तरह आपने देखा होगा बाज़ लोग प्रैक्टिस करते हैं in front of a mirror कि how do I look, how do I move my hands, how I'm expressing something, कि अगर आपने आपकी tone of voice क्या है, कि मतलब अगर आप if you are making a speech किस जगह पे आपने tone of voice अपनी ऊंची raise करनी, मतलब these are things that you need to practice. ठीक है, so no one is God gifted talent कह लें, कुछ लोगों में सलाहियत ज़्यादा होती है, extempore बोल सकते हैं, बाज़ लोग prepare करते हैं, but this is something that we all have to refine and practice. तीसरी चीज़ है, you have to also think improvise. कि अब फॉर इंस्टेंस अगर आप स्पीच देने गए हैं और वहाँ पे आपको पता लगता है कि उनका PA सिस्टम खराब है, they do not have audio, but आपने स्पीच फिर भी देनी है, but now you have to improvise. आप अपनी आवाज़ को कैसे लाउड करेंगे, क्या चीज़ें आप कट करेंगे, अगर कोई ऐसा टॉपिक दूसरा आ जाता है एड्रेस करने के लिए, how you going to put this. So ये चीज़ें practice, refine yourself and improvise. So that will help you inshallah to do really performing in front of how big the audience can be. और दूसरी एक और मतलब तो उसमें अभी से आप ये सोचेंगे if you are performing in front of people, just giving you like just a cognitive hint here कि जितने लोग वहाँ पे आए हैं अटेंड करने के लिए, आपको सुनने के लिए, if you're are the speaker, so they have come all the way, they must have bought tickets, they made arrangements, so they are there to learn. So आप ऐसा सोचेंगे you're transferring the information, transferring knowledge, so that gives you a little positive
that you are doing something that is going to be beneficial. So again, you know, the cognitive restructuring is a separate thing which I can elaborate further. But basically, you know, in performing in front of audience, you need to do these three things. Exactly. अब देखो ना बच्चे, अब मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ बिफोर मूव फॉरवर्ड. मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था, मैं यूनिवर्सिटी पे जाके आई वाज एबल टू यू नो स्पीक इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस. सो बैक देन आई वाज अ वेरी शाय किड, आई कुडंट. फिर लेकिन दूसरा डॉक्टर साहब हमें आ रहे थे कि थोड़ी प्रैक्टिस की, थोड़ी दफ़ा शुरू में गलतियां की, बट इवेंचुअली विल गेट देयर. जो एंड पे बड़ी अच्छी बात की जिसकी वजह से आई हैड टू इंटरफेयर, वो ये है कि अब आपको देख के कितने बच्चों को और भी ये एक हिम्मत आएगी कि देखो वो बच्ची वहाँ बैठ के क्वेश्चन कर रही है और ओपनली सबके सामने लाइव ऐसी बातें कर रही है, तो और भी कितने बच्चों को उस पर आएगी, आई एम श्योर. एंड यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस, सो यू नो आप प्रिपेयर होके आए थे इसके लिए. चलें प्लीज कंटिन्यू. My next question is, how do I build the courage to try something new? So something new, say basically think of this way कि कोई भी चीज न्यू जो आपने ट्राई करनी है, सबसे पहले आप देखें ना कि when you are doing something different that you have not done before, that is basically the goal is to improve yourself, right? So we all want to improve ourselves. देखें ना कि जब आप when you're 6 year old, उस वक्त आप क्या चीज खा सकते हैं, आप क्या काम कर सकते हैं, आपकी skills क्या हैं, motor skills क्या हैं, आप क्या चीज पकड़ सकते हैं, आप you learn how to ride a bike, then you learn how to ride a motorbike, then a car. So इसी तरह आप किचन में चीजें ऑपरेट कर सकते हैं. अगर आप 4 साल के 6 साल के बच्चे को आप नाइफ तो नहीं देंगे काटने के लिए, but when you're 14 you can do it. So basically it's a progression upward for all of us as human beings that we need to improve ourselves. That is what we need to do. So दूसरी बात ये कि you have to try new things. उसमें skills सीखना, that is something upon us. We want to learn new things. ठीक है. For instance, इतने लोग इस COVID-19 की एग्जांपल दूं, इतने लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ फोन यूज करते थे. They did not know how to use Zoom, how to use WhatsApp or video conferences. So they learned now क्योंकि उनके ऊपर जरूरत पड़ी, so they have learned something. So that now makes them a better person. दूसरा experiences हैं. Experiences भी हम जब करते हैं, that is also make us who we are. कि आपको जो experience होता है वो आपको nurture करता है, आपको grow करने में help करता है. It is from simple thing. अगर आपने for instance कोई चीज नहीं कभी खाई, कोई ऐसी डिश है जो आपने सिर्फ सुनी है, कभी नहीं खाई, ठीक है, अगर आप उसको ट्राई करोगे तो आपको पता लगेगा what you like and what you don't like. ठीक है, तो इसलिए एक्सपीरियंस लेने के लिए try new things. You have to do it, trying new food, going to new places, and that is basically the essence, or that is needed for the human success. ठीक है, अगर आप for instance कहते हो कि जी मैंने ये सब्जेक्ट लेना है, ठीक है, आपने सुना सबने कहा जी आजकल ये ट्रेंड है, ये इसमें जॉब्स आके जबरदस्त हैं, आप अगर वो सब्जेक्ट लेते हो तो आपको पता लगता है whether you are capable of doing it or not. So इसलिए ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि यही वो चीज़ है that gives you the incentive, और उससे आपको दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, I can do it or I cannot do it. पर अगर आप करोगे नहीं तो you would never know, and that will become a question mark for you for the rest of your life, and then you will get to the next point, say oh मैं कर ही लेती, मैं ट्राई कर लेती तो. That's why you always have to think whenever the new thing comes, yes it will generate anxiety, yes you have to do it, and that's the only reason that you will find out you're good at it or you're not. Exactly. So my third question is, what do I do to not get touchy over little things? Touchy. So let me ask, like word touchy means like that, meaning you're very sensitive, right? Yes, like sensitive over things. Over things. Okay. उसमें जो ना सबसे पहली जो चीज़ है जो touchy, I know is a broad word. Sensitivity के some people are very sensitive. उसमें आपने ये देखना है कि when you said कि why I get touchy and sensitive, it means you're not usually like that. ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आपको जो थोड़ा सा I want you to understand is कि we all can be, ठीक है, sensitive हर इंसान होता है, हर इंसान की sensitivity का लेवल फर्क होता है. जिससे बाज़ लोग होते हैं वो मजाक करते भी हैं, मजाक बर्दाश्त भी करते हैं. ठीक है, अगर मैं किसी से मजाक कर रहा हूँ, अगर मैं अपने यार दोस्तों के साथ फ्रेंड्स के साथ बात कर रहा हूँ, must be you also do it, कि आप उनका मजाक उड़ाते हैं, किसी बात पे आपका मजाक उड़ाते हैं, so you take it both ways, right? So that is level. लेकिन बाज़ लोग होते हैं वो अदर वे होते हैं, वो खुद कर लेंगे, लेकिन उनको आप कुछ कहेंगे तो वो आगे से हो जी आपने मुझे क्यों किया, so उनका सेंसिटिविटी लेवल दूसरे की तरफ फर्क है, अपनी तरफ फर्क है. तो again sensitivity could be for different reasons. अब उसमें आती है एक तो चीज आती है टेम्परामेंट के, आप कैसे हैं. जिसमें बात लोग होते हैं बड़े हंसमुख जिनको कहते हैं, they're very friendly, आपको पता होता है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स
5-6 लोगों में एक बंदा बड़ा मखौली होता है, ही इज वेरी फाइन विद एवरीथिंग, वो मजाक भी बर्दाश्त करता है, उसको मोटा कह लो, उसको जैसा मर्जी कह दो, चश्माटू कह दो, जो मर्जी उसको कहो, बट ही इज okay to take that because he has learned how to take that and not really feel everything. Exactly. अब उसमें तो आती है एक तो टेम्परामेंट चीज़ है, फिर आती है एक चीज़ कि आप if you start getting irritable and you're very sensitive, there must be a lot going on your mind. ठीक है, अब उसमें different examples हो सकती हैं कि आप if you did not sleep well last night, ठीक है, आप सुबह उठे में आप irritable हैं, ठीक है, आपको कहते हैं अच्छा बेटा ये प्लेट उधर रख दो, आप गुस्से में कि आपने मुझे क्यों कहा? It was a simple question, plate उधर रख दो, but you were so preoccupied, either you did not sleep well or you were worrying about something, you know, you must have gone through something कि भाई आप you were talking to a friend, आपको पता लगा कि she's not doing well or something has happened, you know, that is keeping you preoccupied, but you are still in that moment. Like when someone asks you a question now and you hit it and it comes across that you're very touchy, very, फिर उसके बाद triggers होते हैं past के कि अगर कोई ऐसी चीज past में हुई है और अभी currently आप उस situation में और आपको वही चीज दोबारा से feel हो रही है, then you're gonna be not responding कि उस situation को आपका जो previous experience है, that makes you very touchy. That happens to me. Like things, so like whenever someone disrespects something I like or something, it really like makes me angry or makes me hurt. That's why I'm trying to get over, because they start laughing at me, think I'm stupid for that. Can you give me an example? That I'm okay, like, well, in 4th grade, so right now I'm going in 8th grade, so in 4th grade I was going through a lot of bullying, from which I gathered depression, actual depression, and it was a very tough year for me. So whenever like Jerus's music helped me go through that point, and whenever someone says bad about her, it just makes me sad. So नहीं वो देखे ना, that's what, you know, first of all, again, like I really appreciate for your courage to really talk about these things. These are very difficult things, you know. I tell you, like, you know, that when these things happen, I know, like, that's what I'm really, you know, very grateful for you to really bring that up, ताकि बाकी भी जो बच्चे आपकी एज में तो पता लगे कि it's okay. When you feel like that, it's okay. You need to process this and understand it. That's how you will get better. तो अब आपको देखो ना कि you were talking about like 4 years ago, you went through something that has got, you know, a connection now. So even abhi bhi koi uske bare mein kehta hai, it makes you feel that. So that is your helplessness, that you cannot really explain it, and that's why you react that, whether you're very irritated, annoyed, mazak mein ki tumne kya har waqt kaan pe lagaya hua tum kar rahe ho, to you really get it. Ab usme aati important cheez ki how you are able to now, first thing you've already done, that you're able to identify that this thing is making me upset. ठीक है, उसी तरह ना कि जब तक आप किसी को जाके भाई मुझे प्रॉब्लम है, ओके अच्छा मैं हेल्प करता हूँ, आप उसको प्रॉब्लम होता है कि मैं क्या हेल्प करूँ, कि भाई मेरी हेल्प करो, मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने आप से ये एडमिट करना है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है. तो आप अपने हिसाब से जब एडमिट कर लोगे, आपको पता लगे कि भाई ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं ऐसे हो रही हूँ, मुझे क्या करना है. तो फर्स्ट थिंग यू हैव ऑलरेडी डन, you found out the problem कि भाई इस वजह से मैं ऐसे रिएक्ट कर. Now the second thing is how you're going to make it better, because ये आपको और irritable कर रही है, because you do not want to react like that, you do not want to act like that. ठीक है, वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपके सिबलिंग्स, आपके बहन भाइयों के साथ, कोई किसी के साथ भी हो, तो you feel annoyed. और होता है कि उस मोमेंट में तो आप कह देते हो, कर लेते हो, बाद में जो चीज सेटल होती है, then you feel bad कि मैंने क्यों ऐसे कहा, then you want to apologize, you want to say sorry. So the skill of learning the emotion contest of a reaction is कि हम उस चीज को जितनी बेहतर समझ लेंगे, we will be able to overcome that. जिसलिए आप देखा होगा जो लोग होते हैं जो बड़े calm, collected और बड़े जिनको कहते हैं मध्यम लोग होते हैं, it's not like उनकी इमोशन ही है, वो upset नहीं होते या उनको गुस्सा नहीं आता, ये सारी emotions. I'm kind of like that actually. Like I never cry in public or anything. I'm usually just keep my problems to myself till I can figure out it on my own. Then I discuss if it's getting out of hand. तो वही है ना कि you have to be very careful. You do not want to let it get totally out of hand. So you need to process it. क्योंकि ये होता है कि अंदर से हर वक्त भूलना भी, और जो कहते हैं ना अंदर keeping it to yourself is also not healthy. Both physiologically वो आपके हार्ट पे क्या फर्क डालता है, आपकी स्लीप खराब होती है, ऊपर से आप कुड़ते ऐसे बन जाते हैं कि आप चिड़चिड़ा सा, जिसको कहते हैं चिड़चिड़ा सा इंसान. That is, you do not want to become that one. ठीक है. तो उसलिए दोस्त भी इसलिए जरूरत है. आप दोस्तों से बात करते हैं, आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, आप रिलेट करते हैं और उस चीज को एक्सप्रेस करते हैं, ताकि आप, क्योंकि देखें ह्यूमन कैपेसिटी एक लेवल तक जाती है, उसके बाद इट टर्न्स ऑफ, और दैट इज वेयर यू नेवर वांट टू गेट. तो उसमें आपने जो मैं पॉइंट कर रहा था कि अब आपने ये आइडेंटिफाई कर ली प्रॉब्लम,
सेकंड पॉइंट आपने कर ली कि इट इज बॉदरिंग यू, नाउ वी नीड टू फिक्स इट, ठीक है। आप उसको फिक्स करेंगे, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कम्युनिकेशन, हाउ यू वांट टू कम्युनिकेट दैट, ठीक है। उसमें अगर आप भी कहेंगे भाई देखें, अगर आपको ये लगता है कि भाई मेरी ये हैबिट जो है दैट हेल्प्स मी सूद मी, देखना काफी लोग होते हैं जैसा कि दे लिसन टू म्यूजिक जब वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है। काफी लोग ऐसे होंगे, मैं टेलिंग यू दैट इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। जब मतलब व्हेन आई वाज इन मेड स्कूल और जब हम छोटे थे उस वक्त इतने वो नहीं था, वॉकमैन आया था, फिर सीडी मैन, अब तो हर चीज आईपॉड पे है। सो वी वेंट थ्रू दैट। तो उस वक्त भी होता था, काफी लोग लाइब्रेरी में बैठे थे तो उन्होंने कान पे लगाया था, why I'm that person, I cannot really listen to something and focus, so I need quiet place. It's perfectly fine for everyone learning that. अगर आपको ये लगता है कि भाई that makes me comfortable when I'm doing something, you need to very politely communicate that to your parents or someone who is asking that कि भाई देखो मुझे ये चीज हेल्प करती है ताकि मैं अपना ये काम कर सकूं, there's nothing wrong about it, ठीक है। एक बार जब communicate कर लेंगे ना, so that putting words to that emotion makes it easy for the other person too, क्योंकि हो सकता है जो आपका other person है जो आपको बार बार तंग कर रहा है उसके वहम गुमान भी ना हो कि what are you going through, and that happens both ways, right? So इसलिए communication is a skill that you need to build up and be comfortable about. If something that you are doing that makes you comfortable doing it, you should be perfectly okay with that, but how you're going to let the other person know is very important. Sense? Yes. I kind of have trust issues, like because of like my bullying past. I don't really tell people anything, which leads like I think if they have anything about me, they're going to use it against me because like my mindset's been created that way since the past couple of years. It's like it's hard to let go of it. How do I let go of it? How do I like try to open up to people? उसमें लेकिन you are exactly right. जो trust है, trust you build up trust, ठीक है। लेकिन उसमें होता है कि अब आपके we are again talking about, you see, like there's 4 years and you have built on those 4 years doing this thing over. So it's not going to change over next 1 month or 1 year. It will take some time to reset everything. तो उसमें आपने basically करना, देखें trust you have, that's a human instinct. We trust people and that's why we have relationship, right? कि relationship में trust जरूरी है। Trust is the first thing in any relationship. देखें कोई employer का relationship हो आपके साथ, husband wife का हो, माँ बाप का हो, आपको parents ने अगर कहा कि they're trusting you, you don't do anything, but you do it, so you're basically trying to deceive that trust. Same thing, parents expect you expect the parents, you trust the parents. So trust is a very important thing, and I would highly encourage you that you need to start thinking about it, how to overcome that. Right now you're young, mashallah, 14, but if you keep on building on that, by the time you get to adult age 18, 20, if this pattern continues, it will affect your relationships, ठीक है। इसलिए आपको जरूरी है कि आपने भी देखो, मैं इस वजह से ट्रस्ट नहीं कर रही कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं किसी से ट्रस्ट नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे एक बंदा अगर आपका मजाक उड़ा रहा है, there are 3 other people that who are ready to listen, who are ready to support and ready to help you. So you need to always shift your focus from that negativity that you experienced, you went through, and how to turn it on positive. So that is always the case. Even it's not like that abhi when you're going to be as an adult, I can tell you, Mark can share that we all have situations that we need to really find out. लेकिन अगर आप ये स्किल अभी डेवलप, जितना जल्दी आप ये स्किल डेवलप कर लोगे, that is going to help you for the future. So जितनी जल्दी आपको कि नहीं, I have to trust people, and again like you get hurt, आप जब किसी पे ट्रस्ट करते हो और वो आपको पता लगे कि उस बंदे ने उसको वो किया है, रिप्रेजेंट किया है, या आपने उसको खाली उसको बताया था, that becomes difficult. That's why like that sometimes it's difficult to talk to everyone about everything. आप अगर ग्रुप देखो, ग्रुप ऑफ 6 फ्रेंड्स, उसमें 2 की 4th फ्रेंडशिप होगी, और इट्स नॉर्मल कि आप कुछ लोगों के साथ हर बात कर सकते हैं, कुछ लोगों के साथ आप डिफरेंट बात करते हैं. सेम थिंग हैपेंस इन फैमिलीज टू. So you have to understand कि who you're trusting, and again trust issues जिसको कहते हैं कि those are very pathological if are not taken care of, क्योंकि trust issues would ruin your relationship. एक वो आपको individually आपको खराब करेगा, ठीक है, आपकी इमोशंस खराब होंगी, आपको एंजाइटी होगी, आपको डिप्रेशन होगी, आपके रिलेशनशिप्स, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स खराब होंगे. फिर आप जब जॉब में जाएंगे उसमें आपके इफेक्ट होगा. आपको हर वक्त लगेगा कि ये लोग जनाबली मेरे खिलाफ हैं, मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी कोशिश है कि मैं किसी तरह छोड़ जाऊं, ये हो रहा है, हर कोई मेरे खिलाफ है. नो, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग कि भाई ये चीज है,
मैंने इसको किस तरह improve करना है. तो start making a good trustful relationships and start sharing. And again, like उसमें फिर ये होता है कि if you think it is that much कि आप किसी से बात नहीं कर सकते हो, then I would highly encourage you should talk to a therapist, and that is what we do when we are working with someone, how to really overcome that fear or that paranoia कि आपको लगता है कि हर बात मेरे खिलाफ है. So how to overcome that? So I took this. जी बोलो बोलो. आप बोल सकते हैं, I don't mind. नहीं आप बोलो, आप कुछ पूछने लगे थे, पूछो. मेरा क्वेश्चन था कि मैंने कुछ टाइम पहले 16 personalities वाला क्विज लिया था, and I got INFP, meaning I'm an introvert. So I wanted to know how can I turn into an extrovert, because if I do turn into an extrovert, it's going to help like my self-esteem and my fear of things to like overcome them. Because I just think I'll be more open to people. Okay. Now, first of all, Anwar, I would correct you because I know like online इतने टेस्ट होते हैं कि you do this Facebook पे आता है, what kind of personality you are, this कि जितनी भी मैं भी clinically I use some rating scales हैं जो कि very well validated over period of years that we do it in research में use करते हैं, clinical use करते हैं, depression के scale हैं, anxiety के scale हैं, personality के वो, तो those are just give you an overview and undertone of things कि क्या चीज है, ठीक है. अब जो personality की आप बात करें ना, personality starts from temperament. जैसे temperament होता है, temperament हर एक का बचपन से we have, and there is a genetic kind of an correlation, genetic predisposition जिसको कहते हैं. जैसे आपने सुना होगा expression, वो बिल्कुल दादी भी गई है, वो बिल्कुल दादा की तरह, वो बिल्कुल चाचे की तरह गुस्सा है, ठीक है. अब those things were expression, but they are now scientifically proven temperament is genetically connected, ठीक है. So अब genetically connected ये है कि there are certain traits that you all have, we all go through that. जैसे मतलब I don't want to have too much confusion for you. For instance, like जब बच्चा होता है छोटा, तो उसके different temperament traits होते हैं जिसको हम evaluate करते हैं. जैसा कि self soothing, के अगर एक बच्चा आराम से सो जाता है, जब उसको gets feed, उसके बाद आराम से सोता है. बास बच्चे को you have to really calm them down to go to sleep. Some kids are difficult to understand. आप उनको एक बार बता दें कि ये नहीं करना, they will listen. Some would have to be told multiple times. Same thing happens in the terms of risk taking. For instance, like बास बच्चे हर चीज एकदम jump करेंगे, risk लेंगे. बास बच्चे सोचेंगे फिर कुछ करेंगे. तो उसमें there are different ways to classify the temperament personality. For instance, like harm avoiders एक होती है. For instance, giving an example, harm avoiders and risk takers. ठीक है. अब risk taker जो temperament है उसमें होता है कि they would jump on से कि ओ ये करना है, उनको साइकिल नहीं भी चलानी आती, बाइक नहीं भी चलाना, तो बाइक पकड़ेंगे, कहेंगे मैं किसी कर लेता हूँ. They will hurt themselves, injure themselves. But the risk takers, they just took a risk without evaluating what are the consequences, what can happen, what cannot happen. ठीक है, ये तो हो गया risk taker. जो harm avoider है, उसने कोई भी काम करना होगा पहले सोचेगा, देखेगा, evaluate करेगा, ये ना हो जाए, फिर जाके वो कोई decision करेगा. And that continues over time. Then the temperament continues. We all have it genetically in us, and the environment works on the temperament, and then the personality comes out. ठीक है, तो जैसे personality traits होती हैं. तो पर्सनालिटी ट्रेट्स में अब बेसिकली चीजें ही आती हैं कि नॉट एक चीज अगर आपने ऑनलाइन वो देखी हो कि एक है पर्सनालिटी ट्रेट्स और एक है पर्सनालिटी डिसऑर्डर. ठीक है, इफ यू आर लुकिंग ऑनलाइन थिंग्स, सो बी वेरी केयरफुल कि वी ऑल हैव पर्सनालिटी ट्रेट्स दैट व्हाट वी यूज टू टेक केयर ऑफ थिंग्स एंड हाउ वी रिएक्ट टू सिचुएशंस, रिलेशनशिप्स. लेकिन पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज अ पैथोलॉजिकल थिंग दैट मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू फंक्शन. जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की डेफिनेशन उसमें के बाद लोग कहते हैं जी आई एम इंट्रोवर्ट एंड आई कैन टेल यू क्लिनिकली आई वर्क विद सो मेनी यंग पीपल योर एज, दे कम टू मी, इवन सम एडल्ट्स टू, दे थिंक दैट दे इंट्रोवर्ट and they don't want to do something because they always knew that this is who I am, and they were wrong. They were wrong in the sense because they had perceived themselves because of their few experiences in life doing it over a period of years thinking this is who I am, but they were not. Once you take care of their anxiety, they come out and they are able to do so many things that they always wanted to do and they are capable of doing. So ye cheezein, that has to be very carefully calculated. That's why I heard that expression, oh, I'm introvert, I'm extrovert. No, that is not definition. Yes, we have traits. For instance, like some people like to be in the limelight. For instance, giving example, आप किसी जाते हो gathering में, शादी का function है कहीं पे, पांच लोग वहाँ पे आएंगे, they want everyone to know I'm here. They will be very loud and अस्सलाम वालेकुम ये करके ऊंचा बोलेंगे ताकि हर एक को पता लगे मैं आ गया हूँ. ठीक है. So there's some people like that. Some people just come
they would gently sit with someone, अपने साथ वाले से बात करेंगे, उसको जानते नहीं जानते अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे, एक दो आसपास के लोगों से बात करेंगे, बाद लोग जाएंगे वो हर एक से मिंगल करेंगे, हर एक को इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने आप को, ताकि तो ये ना ये पर्सनालिटी ट्रेट्स होती हैं which is perfectly fine, but how you refine your personality traits to really function in the community and the society, that is the art. ठीक है? So I would say please do not really label yourself as an introvert कि मैं ये काम नहीं कर सकती कि मुझे ऐसा. Yes, if you work with someone, overcome your anxiety, then it's okay that you are not the person that who would jump on say कि मैं सबसे पहले speech करने के लिए खड़ी हो जाऊंगी versus other friend that who's always ready. That's perfectly fine. But ये जो है ना classifying yourself into a particular category and then believing it would not be healthy for you, especially at this age. अभी आप have a full life ahead of you. आपने कॉलेज जाना है, आपने जॉब, आपके रिलेशनशिप्स, आगे everything is dependent on how you're gonna take care of yourself. Yes. सर यहाँ पे डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन भी है, वही जो नूर बात कर रही थी. आप क्योंकि हम ये काफी सुनते हैं इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, और मैं भी सारी उम्र ये सुनता रहा हूँ, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं भी अपने आप को इंट्रोवर्ट कहता रहा हूँ, अभी भी कहता हूँ. एंड जिस तरह आपने कहा, मुझे लोग कहते हैं नहीं यार तुम नहीं हो, लेकिन आई थिंक ऑफ माई सेल्फ एज एन इंट्रोवर्ट. सो माई क्वेश्चन राइट नाउ इज के देयर इज नथिंग रॉन्ग विद बीइंग इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट. तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो जरूरी तो नहीं कि आपको एक्सट्रोवर्ट होना है, या अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो उस पर अगर आप कमेंट कर दें थोड़ा सा. उसमें वही मैं अभी नूर को सब बता रहा था कि जो हमारी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं टेम्परामेंट के साथ, वी आर गिफ्टेड विद दैट. ठीक है, तो अगर देखें बहुत लोगों का मैं एग्जांपल हमेशा ग्रुप की इसलिए देता हूँ कि मतलब एट दैट एज डेवलपमेंट आपका ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होता है, तो यू लर्न फ्रॉम द पीयर ग्रुप एंड दैट इज हाउ नॉर्मल डेवलपमेंटली वी एक्सपेक्ट एंड वी गो थ्रू ऑल ऑफ अस थ्रू दैट. तो उसमें अब जैसा एक बंदा बड़ा मखौली होता है, ही इज द रियली द उसको कहते हैं लाइफ ऑफ द ग्रुप. ठीक है, अगर आप कहीं ग्रुप जाने का प्रोग्राम बना रहे हो और वो कहते हैं जी अहमद नहीं आया और वो नहीं आ रही, देन यू विल फील चलो ठीक है मिल लिया खा लिया. लेकिन वो जो ना होता है जिसको कहते हैं जुगते लगाने का शौक है, जिसको मतलब हु इज रियली दैट ह्यूमरस पर्सन दैट हु रियली कीप्स द, अगर सिचुएशन बहुत कोई बुरी भी हुई हो, फेल हो गया है, कोई टेस्ट खराब हो गया है या किसी की फैमिली प्रॉब्लम हो गया, बट ही विल ऑलवेज ब्रिंग यू अप. ठीक है, सो दैट पर्सन हैज दैट ट्रेट. बट यू कैन नॉट रियली से कि मैं भी उस तरह का बन जाऊं और मैं फिर ठीक हूँ. नो, नॉट एट ऑल. वो उस बंदे की ट्रेट है, वो उस शख्स की ट्रेट है, वो उसके साथ उसको हेल्दी तौर पे कैसे यूज कर रहा है, दैट इज व्हाट ऑल मैटर्स. सेम थिंग फॉर यू. अगर आपको लगता है, जैसे मैं अभी कह रहा था कि इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई अगर आपकी एक फ्रेंड है, शी वांट्स टू डू एवरीथिंग वेरी प्रोमिनेंटली, यू डोंट, इट्स परफेक्टली फाइन. बट आर यू कंटिन्यूइंग एंड मेकिंग द प्रोग्रेस इन योर लाइफ, दैट इज व्हाट मैटर्स. सो अगेन क्लासिफिकेशन जो है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दिस एंड दैट, that does not stand valid. And again, like, you do not want to be like someone else. That is another thing that I would highly encourage, that yes, we can have kind of an impressive impressions of some people. We like to be someone, we like to dress up like someone, we like to talk like someone. That is natural, that is in all of us. लेकिन आप किसी चीज की भी admire करना, किसी चीज को या किसी चीज की अच्छी चीज को adapt करना, we all want that. ठीक है, from simple thing, as a Muslim, अगर आपका एक friend है, वो जब भी कहीं बैठे होते हैं, नमाज का टाइम होता है, she is always going to pray on time. That is something that you would like to inspire to, right? So अच्छी हैबिट्स किसी की लेना या उस तरह होना is nothing wrong. लेकिन आप कहें कि जी मैं इस तरह का हो जाऊं कि भाई वो हर जगह पे बड़ा कंफर्टेबली जाके बात कर लेती है, हर एक के साथ करती है, वो हर स्पीचेस में होती है, वो डिबेट ग्रुप में है, वो दिस ग्रुप में, no, not at all. You need to find out कि what you're good at, and alhamdulillah I can say that all of us, अल्लाह मियां किसी को भी बगैर abilities और talent के नहीं बनाता. We struggle all our lives to find out what we are good at. Yes, उसमें आपके support, आपकी family की support, आपके friends कैसे हैं, आपकी environment कैसी है, आपको मौके कैसे मिलते हैं, they all play around you, those factors. But you need to find out individually what I'm good at. Once you find out, then believe me, like all anxiety, your control over things will be very different because you will be comfortable inside yourself. So again, like बाज़ लोग कहते हैं कि unfortunately I see some parents also expect that why तुम उस तरह क्यों नहीं करते, तुम ऐसे क्यों नहीं करते. Not at all. आपका अपना aptitude है. आप जैसा यहाँ पे वहाँ पे पाकिस्तान में करते हैं aptitude test करते हैं कि भाई हर एक को डॉक्टर नहीं बनना, हर एक को इंजीनियर नहीं बनना. अगर आप देखें ना, अगर हर कोई डॉक्टर बन जाए, हर कोई इंजीनियर बन जाए, तो दुनिया कैसे चलेगी. Every profession that you see around you, someone is doing it. So everything that is happening हमारी society में all around us,
someone is working on it, that's why these things are happening. ठीक है, अगर कूड़ा उठाने वाले ना आए 2 दिन तो आप देखें क्या हाल हो जाएगा सोसाइटी का. ठीक है, सेम थिंग अगर आप जो स्टोर है, अगर स्टोर पे एक बंदा जो सेल्समैन खड़ा है और वो जो स्टॉक अप करता है सुबह 5 बजे सारी चीजें रखना शुरू करते हैं लेबोरेटरी को, अगर वो बंदा काम नहीं कर रहा तो हाउ वुड यू सी द सोसाइटी. तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड. आपको ये देखना है कि व्हाट आर यू गुड एट. सो वंस यू फाइंड आउट हे दिस इज आई एम गुड एट, you keep on polishing it, you will keep on adding on it, और उस तरह जिंदगी में लोग आते जाएंगे, आप किसी को देखेंगे यार इसका ये स्टाइल अच्छा है, I would see if I can do it. So again, like, you know, you refine yourself like that. So perfectly fine. How do you find your secret talent, like something you're truly good at? देखिए उसमें देखें अब right now at the age that you're gonna go in 8th year, जिसमें वो बात कर रहा था कि finding out what you're good at, वो जो आपने शुरू में क्वेश्चन पूछा था, very you know related to that के about the new experiences. ठीक है, अगर आप नई चीज ट्राई नहीं करोगे या उसको एक्सपेरिमेंट करोगे या उस चीज के लिए इनिशिएटिव नहीं लोगे, you would never find out yourself. अभी बुकलेट तो नहीं हमें मिलती ना कि भाई ओके मोहम्मद मुनीर तुम्हारे ये 10 टैलेंट हैं, इन पे काम करो ये ठीक हो जाएगा. नो, we all have it. जिसमें होता है एक ही घर में पैदा होने वाले, इवन यू नो we have studies कि जो आइडेंटिकल ट्विन होते हैं जो आपको देखने में एग्जैक्टली एक जैसे लगते हैं, they grow up to be very different. उनका टेम्परामेंट बचपन से फर्क होता है. We have studies that we track them at ages, you know, growing up even as individual, they ended up with total different personalities. Although born from the same, you know, mother, from the same womb, but they went to be different. Why? Because brain is different. So that's why आपको ये देखना है कि भी मेरे अंदर क्या possibilities हैं, आप क्या करना चाहते हो. देखें ना, जो उसको पूछते हैं इंटरव्यू में, what is your passion, where do you see yourself in 5 years? Basically that question basically is directing कि आप अपने आप को आगे देख रहे हो, what do you want to be. ठीक है, अगर आपको let's say आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई लॉयर, कोई भी प्रोफेशन है, वो आपको इतना इंस्पायर करता है, आपका ओल्डर कजन है कि यू से कि भाई मैं उससे इतने इंप्रेस हूँ, दैट मे बिकम योर पैशन कि भाई आई वांट टू गो इनटू दैट प्रोफेशन, क्योंकि यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट इट वेरी अर्ली इन योर एज, यू स्टार्ट फीलिंग आउट एंड देन यू विल रिफाइन इट कि भाई. अब वही वाली बात है कि टैलेंट हम सब में है, हमने उसको रिफाइन कैसे करना है, दैट विल डिपेंड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक एन एफर्ट, you need to experiment with the new options, new changes. Yes, anxiety होगी कि मैंने कैसे करना, जिस तरह कोई ऑप्शन मिलती है स्कूल में कि आपको यू नो होता है कि जी साइन अप फॉर डिबेट क्लब और वॉलंटियर कोई ग्रुप एक्टिविटी है, वो कह रहे हैं कि भाई हमें स्टूडेंट्स चाहिए जो कि इंटरनेशनल कोई ग्रुप आ रहा है, यू नो आपकी इंग्लिश अच्छी है, दे वांट टू टेक 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम योर स्कूल to go and you know be the guide for them, for instance. I'm giving an example just hypothetically that way. So अगर आपको लगता है कि भाई I want to learn about other cultures, ये option है, ये opportunity है, then you need to make an effort. अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, पता नहीं क्या होगा, लोग समझेंगे मेरा इंग्लिश का एक्सेंट अच्छा नहीं, ये नहीं, so you have already created so much of negative power that pushed you away, although your talent is there, but you did not make an effort to make that opportunity for you. So इसलिए जब भी कोई opportunity आती है, keeping in mind anxiety हमेशा होगी, how you overcome that, then it will push through, और एक step by step ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चीजें सारी improve करती हैं when you make that. आपने भी कहा था कि आप like लोग आपको पूछते question where do you see yourself in like 5 to 10 years. What if you don't know where you are, like what if you don't actually see yourself anywhere, your future is kind of unclear, like blurred out? No, nobody, honestly, like if I ask you that question, you have no way of telling where you're going to be in 5 years, right? So I'm just giving an example. लेकिन आपको ये देखना है कि भाई मैं क्या, what is my passion, what I want to do. और अभी it's too early at your developmental age to really know what you want to be. But लेकिन वही बात है ना कि success का सबसे पहला जो you know rule है वो you keep on moving. So difference between a successful person and a person who failed is that that person stopped moving. As long as you keep on moving, you know you will get to that point by the left turn or the right turn. Okay, the pathways will come to you if you keep on moving. अगर आप move करना बंद कर दो और छोड़ दो कि भाई मैं तो कुछ कर नहीं सकता और मैं capable नहीं, that's what the depression is. कि आप if you give up, then you cannot succeed, no matter where you're gonna be. और 5 साल, you know, हमें 5 साल की बात करते हैं, हमें ये नहीं पता अगले महीने क्या होने वाला है, कल क्या होना है, तो you know, so that is a ambition that we have, but that's how we rely, you know, on Allah Taala ki Allah keeps on guiding us and giving us the strength to think about future. जी. My next question is, how do I keep myself away from panic attacks and how do I handle them?
अच्छा, पैनिक अटैक से मैं एंजाइटी का आपको बता रहा था अर्लियर कि पैनिक अटैक इज अ सडन रश ऑफ एंजाइटी, ठीक है, जो इतनी स्पाइक हुई, इतनी एकदम जैसा लिड खुल गई है, इट ओवरफ्लोड, ठीक है। पैनिक अटैक में होता क्या है, यू स्टार्ट फीलिंग कि पता नहीं क्या होने वाला है, यू स्टार्ट फीलिंग कि आपका हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग फास्ट, आपके पाम स्वेटी हो जाते हैं, यू स्टार्ट शेकिंग, आपकी आवाज नहीं निकलती, आपको लगता है, जिसको हम कहते हैं टनल विजन, कि आपको लगता है कि हर चीज इस तरह खत्म हो रही है, ठीक है। यू स्टार्ट फीलिंग लाइट, कि आपको लग रहा है कि आप गिर जाओगे। सो दिस इज अ फुल ब्लोन पैनिक अटैक, जिसमें बॉडी रिस्पॉन्ड करती है फिजियोलॉजिकली, which is basically all आपका सिस्टम जो है, हार्ट रेट, आपका पल्स, आपकी मसल टोन, आपकी स्वेट ग्लैंड्स, दैट चेंजेस, ठीक है, आपकी विजन सारी वो हो जाती है। और जो साइकोलॉजिकली वो हो रहा है, वही हो रहा है कि आपको लगता है कि दैट एवरीथिंग इज शटिंग डाउन, ठीक है। इसलिए बात का जब कोई एंजाइटी, आप थिंक ऑफ योर बिग एग्जाम, ठीक है, जो आपका फाइनल एग्जाम है, व्हेन यू आर वॉकिंग टुवर्ड्स द क्लासरूम और एग्जाम रूम, उस वक्त हार्ट कितना रहता है, हम दुआएं पढ़ रहे हैं, दुआएं कुनूत पढ़ रहे हैं, आयतुल कुर्सी जितनी तैयारी की होती है, लगता है कि बस भी कुछ नहीं होगा, लेकिन जब बैठते हैं, सो यू नीड टू कंटेन योरसेल्फ के जो 5 क्वेश्चन आए हैं, उसमें से अगर एक नहीं भी आता और अच्छा नहीं भी आता, लेकिन आपको 4 अच्छे आते हैं, राइट। So if you're gonna focus on that one question that you do not know everything, you're gonna ruin whole thing. You go to 4 question and that will make your 80% score, right? So that is how we learn how to contain anxiety. The panic is happening because you have not been able to learn how to really go through that spike of anxiety building up. और हर उसमें moments में होता है, मतलब suddenly भी हो सकता है, suddenly in the sense ये कि you never had anxiety about anything, like suddenly something bad happens, God forbid, ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई सडन न्यूज आती है जिसकी वजह से you start feeling that. So that's perfectly okay. लेकिन if it's happening very frequently, it means that you should definitely consult and seek treatment, क्योंकि आपकी anxiety, because having multiple panic attack is not a good thing to have. So, for example, if like some of my friends actually have panic attacks whenever like they have to do anything, so like I wanted to ask this on my friend's behalf, that if she's having a panic attack on the moment, how does she handle herself? Because like if I'm having it or she's having it, we both have this thing common. We both like break down crying because we can overbear the fear that we're doing something new, or like we just can't control the anxiety. So how do we handle it तो after उसमें it's मतलब like बात है ना exploded? कि वही मैं कह रहा था ना कि I don't know it happened only once or twice, but I would again making sure again it is not a treatment discussion that we are having specifically, and I'm just giving you a overall view of things. If someone is having a panic attack, depending on the panic attack, what led to the panic attack, उसमें again like I do not want to make a recommendation without having the whole clinical information कि क्या हुआ है. इसमें होता है कि sometimes you start breathing very high, क्योंकि that's also response to you आपकी hyperventilation जिसको हम कहते हैं, तो उसमें होता है कि you breathe in a paper bag, प्लास्टिक एंड पेपर बैग में करते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप हो, ताकि आपकी ब्रीदिंग सेंटर नीचे आए, ठीक है। लेकिन उसमें मैं कहूँगा कि if you are seeing if someone of your age is having it, you have it, I would definitely discuss with your parents कि भाई ये चीज हो रही है, then you should definitely consult a professional to discuss that, क्योंकि you may be needing a little medication to bring your anxiety in control, क्योंकि देखिए अगर baseline anxiety constantly high है and one simple thing happens, it will spike panic attack very quickly. So you see that मैं आपको example दूँ कि if your heart rate, if you keep on having sudden palpitation जिसको कहते हैं कि एकदम आपका heart rate और आप you start feeling nauseated and you feel throwing up, एक आध बार कभी हो गया जिंदगी में, maybe very rare occasion, you don't worry about it. But if it is really a pattern, then it's a concern, ठीक है। और उसमें panic attack का ये होता है कि by definition panic attack is कि if you are now sitting at home comfortably, in your own environment and you're talking to me, अगर in back of your mind you're fearing you're going to have another one कि ये हो जाएगा, that is definition of panic attack. You definitely need to then seek a little guidance and help clinically so we can overcome that. I think I will tell this story because this happens to a little often. Like panic attacks only happen to me when I'm doing something with an audience. Like last month or something, I had to do this debate thing on Zoom for my school, which was with another school, and so I got so intimidated before, like the speakers before me, like they were so like they knew what they were talking about, and I was giving my speech because it was a debate, right? And I just stopped midway and I just was like, can I go in the end? And I turned my camera mic off and I just started crying because I got so like, that's when I had a big panic attack. It only happens
when I'm intimidated or I have like fear of something. That's when I get panic but attacks. again, sir, again, giving that kind of a disclaimer, okay, obviously I cannot tell you more about your, friend, because आपको situation specific anxiety है, ठीक है, when you have to perform. But panic attack इस तरह की अगर आप सभी घर बैठे हुए हो आराम से, तो you can certainly have a panic attack, ठीक है, क्योंकि panic attack does not happen because of only the environment outside. It is triggered from inside. कि all of a sudden आपको कोई चीज याद आती है, आप बैठे हुए, my God, मैंने वो बिल नहीं पे किया, my God, मैंने उसको बताना था, ये उसका ये हो जाएगा, तो that triggers the infliction of a second, that one trigger of thought quickly opens up an emotional overflood that really gives a physiological response, जो कि सारी body की changes, आपकी hyperventilation, heart rate changes, sweating. So a little earlier आपने कहा था कि कुछ लोगों को जब sleep cycle ठीक नहीं होता, they get a little rowdy. Like मुझे temper issues and just because I get a little rowdy क्योंकि मेरा sleep cycle भी balance नहीं है. मैं क्या कर सकती हूँ कि मेरा sleep cycle like मैं early school के लिए हो जाए क्योंकि online school चल रहा है. So how do I have a healthier sleeping cycle? उसमें I think at the start of that session जिस हमारे ने बात की थी, जब last time March में when you're talking again, I can now comment on that way more in depth clinically कि 3 महीने में हमने देखा ये pattern किस तरह हुआ है. So one of the important things, again I would say it with optimism कि hopefully inshallah COVID-19 की situation बेहतर होगी, कुछ चीजें normal life की तरफ किस तरह जाएंगी, but for foreseeable future we need to be making sure that we have a pattern of life for this time, ठीक है. अब everything is online, ठीक है, Zoom meetings पे सारे काम हो रहे हैं, school online है, transactions हो रही हैं, businesses चल रहे हैं, everything is now remotely done. So basically you are operating on a remote life, ठीक है, बीच में थोड़ा है, offices खुल गए हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ partial काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. So you have to first of all, very, I would say religiously follow this pattern, that you have to get in that frame of mind कि my school is in session now, ठीक है. School is in session का मतलब ये है कि अब आपने स्कूल जाना है, सुबह 8 बजे की क्लास शुरू होती है आपकी. जो आपका पैटर्न था ना प्री कोविड, जिस टाइम पे आप उठते थे सुबह, नाश्ता करते थे, नहाते थे, तैयार होते थे, then instead of getting in the car and driving to school, you're doing everything before that, ठीक है. उसमें सबसे important चीज है, which I am encouraging all of my young folks, अभी colleges भी चल रहे हैं, summer schools हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, that you have to get up and get ready, meaning you have to change, ठीक है. अगर आप उसी तरह अपने पीजेस में रात के कपड़ों में बैठे, थोड़ी सा सीरियल खाया, थोड़ा सा नाश्ता किया और बैठ के जूम ऑन करके, या आपने मतलब ऑडियो ऑन की भी, आपको पता है कुछ नहीं, मैंने बाल भी कंघी किए नहीं किए, डज नॉट लुक, अगर किसी दिन आपने वाकई प्रेजेंट करना है, then you get ready, that is going to be making a very difficult thing for your mind to process. Why? And let me explain. It's a little complicated, but let me explain it why it is important to keep that routine in place. Routine सबसे पहले important है, ठीक है. सुबह उठना टाइम पे, doing every ritual that you do to get to work, ठीक है. उसमें it includes changing, ठीक है. अगर आपका स्कूल यूनिफॉर्म है या आप स्कूल यूनिफॉर्म नहीं भी है, but you need to change, ठीक है. Number 2, you have to find out and designate a place in your home that is your school or your office, your college, जो भी आपने काम करना है ना weekday में, you have to designate place. For some of the folks, I may have mentioned that earlier, that you have to write down on a piece of paper, school 8 to 1, 8 to 2. जितना भी आपका school का time है, make that. Preferably, it should not be your bedroom. Preferably. Reason is that क्योंकि अगर आप अपने बेड में अपना लैपटॉप ऑन किया, उधर से बैठ के आपने थोड़ा काम किया, उठ के गए किचन से जाके कुछ खा के वापस आए, दोबारा शुरू किया, बाहर जाके थोड़ा सा देखा, घर के बाहर कोई बेल बजी देख के आए, फिर आके शुरू किया, तो अगर तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो रहा हो, फिर तो ठीक है, मतलब आपको पता है कि चलो जी कोई हफ्ते 10 दिन की बात है, उसके बाद दोबारा नॉर्मल रूटीन शुरू हो जाएगी, दैट इज डिफरेंट. बट दिस थिंग इज कंटिन्यूइंग, एज वी वर टॉकिंग अर्लियर, मैं बात कर रहे थे, बात के ये चीज अभी हमें पता नहीं 3 महीने से ऊपर हो गया, राइट. अब अल्लाह खैर रखे, पता नहीं कितने और महीने या साल चलना है, ठीक है. सो वी नीड टू नाउ प्रिपेयर आवरसेल्फ बिफोर इट स्टार्ट्स रियली गेटिंग टू अस. तो रूटीन और एनवायरनमेंट का कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. अब एनवायरनमेंट का कंट्रोल क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चे के, इफ यू आर नॉट गोना बी गिविंग योरसेल्फ दैट स्टिमुलस, क्योंकि हम देखें एनवायरनमेंट का असर हम पे होता है, हम एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट करते हैं, इट गोज बोथ वेज.
अब आपका घर की जो एनवायरनमेंट है वही जो आपका घर है, उसी में आपने रिलैक्स भी करना है और उसमें आपने स्ट्रेस भी लेना है, अपना काम भी करना है, ठीक है। अगर आपने अपने आप को फॉर्मेट ना किया, जिसको कहते हैं ना हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट दोबारा से आपको करना पड़ रहा है, आपने फॉर्मेट ना किया अपने आप को इसलिए कि ये मेरा रिलैक्सेशन टाइम है, तो यू वुड नॉट बी एबल टू रिलैक्स। अगर आपने उन्हीं कपड़ों में स्ट्रेसफुल आपने अपना स्कूल का काम किया, कोई आपके टीचर से बात थी, आपकी एंजाइटी हो रही थी, आपने किया, चलो जब वो खत्म हो गया, बट यू हैव नॉट चेंज द एनवायरनमेंट अराउंड यू बिकॉज यू कांट नाउ। स्कूल तो आप जाते हैं ना, स्कूल आए, चलो शुक्र है यार जुमा आ गया, स्कूल खत्म हुआ, यू गेट अ रिलीफ कि अभी आप घर में अपनी ओन एनवायरनमेंट में आ गए हो। अब नाउ द सेम एनवायरनमेंट इज आवर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट एंड रिलैक्स एनवायरनमेंट, और उसको हम चेंज नहीं कर सकते। यू हैव टू इंटरनली रीसेट योरसेल्फ ताकि आप उस एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सको, ठीक है। अगर आपने वहीं पे उसी लैपटॉप पे वहीं पे बैठे स्कूल का काम किया, वहीं से आपने नेटफ्लिक्स का अपना अगला शो शुरू कर लिया है, यू वुड कंफ्यूज योर ब्रेन सो मच कि यू वुड नॉट नो कि मैं रिलैक्स कर रही हूँ कि क्या कर रही हूँ। सो यू नीड टू रियली प्रोसेस इट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई एम एनकरेजिंग अ लॉट ऑन दिस बिकॉज ये चीज, नॉट टू से दिस वे, अगर आगे ये 3 महीने 6 महीने 8 महीने चीज ऐसे ही रहती है, अगर अभी हमने बहुत अडल्ट हो रही है ना, सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बात कर रहा, वी ऑल हैव टू समहाउ गेट इनटू दैट फॉर्मेट नाउ, ताकि बाय द टाइम, क्योंकि जब फॉल और विंटर शुरू होती है और ये चीज अगर चलती रही खुदा ना खासा इसी तरह, इट इज गोना बी वेरी चैलेंजिंग, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। राइट, बट व्हाट इफ लाइक एक रूम आपका कूल है, लाइक यू नो फ्रॉम एसी एंड फैन एंड ऑल, और दूसरा लाइक आजकल तो बहुत गर्मी हो रही है क्योंकि अब समर्स हो गए, सो हाउ डू यू मेंटेन दैट बिकॉज़ इट्स टू लाइक उसमें हॉट देयर, यू नो। नहीं, उसमें वही है ना, बल्कि हर इंडिविजुअल की सर्कमस्टेंसेस फर्क होंगे, लेकिन उसमें ये कि अगर आप ये फ्रेम ऑफ माइंड रखें ना कि भाई मैंने इस चीज को ऐसे रेगुलेट करना है, देन यू कैन स्टिल डू इट, ठीक है। True. उसमें देखें अब ये कि अब आई एम नॉट श्योर कि अगर आपका स्कूल का टाइम सिर्फ एक फिक्स टाइम है और यू कैन डू इन ब्लॉक्स, देन यू हैव टू फाइंड आउट कि भाई मेरा भी स्कूल का टाइम है, इस वक्त मैं अपने कमरे में हूँ, और आई वाज सेइंग प्रेफरेबली नॉट योर बेडरूम, अगर आपका बेडरूम ही है जिसको आपने यूज करना है, then make some structural changes कि you're not sitting in bed, कि अगर कोई डेस्क है या टेबल है उस पर बैठ के, और you're at least changing, देखिए ना, अगर आपने कपड़े चेंज किए खाली स्कूल जाने के लिए, नाश्ता करके आप आके बैठे हो, so you are in a way that कि भाई मैं इस वक्त काम कर रही हूँ, what says कि आपने उन्हीं उसमें पूरा दिन गुजार दिया। इसलिए जब बाज लोग मेरे जो काफी जो पेशेंट्स हैं जो कि एंजाइटी और डिप्रेशन के, दे आर ऑफ फ्रॉम वर्क और दे स्टेइंग होम, आई स्टिल एनकरेज देम टू चेंज, to get ready, क्योंकि देखें होता ये कि if you are not giving that stimulus to you, you are going to be going into one simple static phase, then it is very difficult to regenerate energy to do anything. आपको लगेगा मैं तो पिछले 6 महीने से, अब जैसा समर ब्रेक यहाँ पे भी अमेरिका में भी मार्च की समर ब्रेक शुरू हुई है, ठीक है, although it was before spring break, लेकिन मार्च 16 से we are kind of in summer break, ठीक है। अब समर स्कूल शुरू हो गया, थोड़ा बहुत खुल गया, लेकिन if खुदा ना खासा स्कूल नहीं शुरू होते तो दिस इज गोना कंटिन्यू। तो आपको खुद फ्रैगमेंट करने हैं अपने डेज ताकि आप उसको रेगुलर कर सको। इसलिए जब स्कूल का 5 दिन का स्कूल हो गया, अब वीकेंड है, यू नो एंजॉय इट एज द वीकेंड इज। सो वो जो आपने करना है ना अपना सेटअप घर में, वो आपने खुद निकालने के लिए मैं कैसे कर सकूँ। अब आपको मतलब कम से कम आइडिया मिल गया कि ये फ्रेमवर्क क्यों इंपॉर्टेंट है, देन यू कैन डेफिनेटली प्रोसीड विद द प्लान। ओके, तो मेरी जो रूटीन है, आई वेक अप एट 8:30, देन स्कूल स्टार्ट्स एट 9, और फिर लाइक 11:20 to 11:40 हमारी लाइक ब्रेक होती है, सो आई हैव माय ब्रेकफास्ट एट 11:20 or 10:30, सो हाउ like what ideal time should I have my breakfast then that I can get a good head start for the day? So you're having your breakfast during your school time? In break though, not break. in school exactly. Because I don't feel hungry when I wake up. नहीं, बट जब आप स्कूल जाते हो आम दिनों में, जब मार्च लॉकडाउन से पहले, तो आप ब्रेकफास्ट करके जाते थे कि नहीं? करके जाती थी। तो you see that's a very big change that you have done. So basically 11:30 तक आपने 3 घंटे अपने ब्रेन को आपने वो डाला, और आपको था कि बस ये भी बस मैं ब्रेकफास्ट करने जाऊंगी किचन में, एक पराठा बनाए के टोस्ट खाऊंगी, क्या खाऊंगी। So you're already generating yourself in a way कि आपने सुबह नाश्ता नहीं किया। और इसका मतलब अगर 8:30, आप सुबह कितने बजे उठते हो जब when you go to school before pre-COVID? Like normal जब कोरोना वायरस नहीं था तब, या आजकल? नहीं, before कोरोना वायरस। 7. जी, so आपने सिर्फ आधा घंटा रखा, आधे घंटे के अंदर में बस
मुंह धो के बैठ जाऊंगी और काम शुरू कर दूंगी बगैर नाश्ता किए. You see, that's a big change that you have done for you, which I'm talking about should not be happening. So you have to reset, go back to school time. ठीक है? कि वो भी बात है कि उसमें obviously बात है आप drive time निकाल दो कि आपने drive नहीं करना तो इसलिए आपको 7 बजे आप नींद पूरी करो उठो लेकिन do everything that you do before you do the school. और क्योंकि जो उसमें है ना breakfast, you know, it's a total separate discussion. Breakfast is a very critical meal of the day. ठीक है? क्योंकि होता है कि आप और especially developmentally at your age and especially as a female, you have to be very careful that you should not be skipping breakfast. क्योंकि basically आप रात को सारा, you know, the whole system जो अल्लाह ने create किया है, that it's the hormone system is working all along. और सुबह के time पे the first meal, which is our breakfast, you know, why we call it breakfast? You're breaking the fast. You know, आपने 6 घंटे 7 घंटे जब सोए हो रात को, you did not eat anything. You break that fast. क्योंकि the body needs that energy, the caloric intake, to really regulate the hormone system or get you ready for the first half of the day before you get to the lunch, right? So make an habit, inshallah, that you get back into the format of taking your breakfast on time and doing it, and then obviously जब आपकी break होती है, then you can eat anything you want. Okay. Or my next question is, how do I convince myself that other people's opinions don't really matter? Okay. So how long have you been thinking like that? I don't know. Like, it depends per situation, really. Sometimes I'm like, I think I trust my own self more for this, but sometimes I'm a person who seeks for approval a lot. Like, do you think I'm doing this right or do you think I'm doing this wrong? Because I have this thing in my brain where I need to seek approval. Okay. So usme, you know, I want to simplify it. कि सबसे पहले बात है कि अप्रूवल ओपिनियन की बात है कि ओपिनियन मैटर करती है एंड ओपिनियन मैटर किस तरह करती है कि you are, you know, valuing opinion of your parents, your siblings, your friends and all that. So obviously that's natural when you live in an environment, in a society, you know, want other people to think how they think. ठीक है, अगर आप कोई कपड़े खरीदते हो या कलर पहनना चाहते हो, you ask an opinion, लेकिन at the end you would do and you should do what you are comfortable with. ठीक है, why? क्योंकि opinion matters, लेकिन just to keep on doing something to please others is not a healthy life. अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक काम we do, इसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं है. There are certain things that yes we end up doing that we are not comfortable with. We are just trying to please or for comfort of other people. You know, I know, like, you know, you're a kid, तो इतनी चीजें आप करोगे कि भाई मेरे, you know, parents को ये अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं नहीं करती. That is fine. Taking care of parents is, you know, on us. We do that. Again, like, we grew up, you know, it's not like मैं आपको ये बता रहा हूँ. Yes, as a kid, you go through that process of understanding, then you start getting, once you're going to get to that older age, you will be a parent, you will understand, oh, this is how it happens. So relationships की value के लिए, relationships को, you know, to take care of your relationships, yes, opinion matters, then you do certain things for them. But I would highly encourage you not to just go into that format that you're only doing things just to please others, because you cannot please everyone all the time. आप एक बंदे को प्लीज करोगे, उसकी ओपिनियन को रखोगे, दूसरा बंदा कहेगा तुमने ऐसा क्यों किया, तीसरा कहेगा नहीं तुम्हें आधा नहीं करना चाहिए था. So you need to be very careful that you need to take care of yourself, be comfortable what you are doing, and yes, people have different opinions and opinions change too. For instance, like, आप अपने किसी फ्रेंड से आज एक किसी बारे में ओपिनियन लोगे, she may give you a different, you know, opinion about that. या उसकी acceptance फर्क होगी 6 महीने बाद कि भाई आपने ये काम करना है कि नहीं करना. 6 महीने बाद वो कहने नहीं, मैं उस वक्त ऐसे सोचती थी, लेकिन it's okay. So you need to be careful, like, not to rely too much on the opinions. Okay, my last question is, what can I do to feel good and positive about myself? When you say positive about myself, like, you're talking about like how you value yourself, your self-esteem, yes. or you're talking, okay. Self-esteem. So, okay. So, अब इसमें ऐसा देखो कि understand this कि जिस समय भी it's related to that opinion question, कि if you're gonna only rely on other people to assure you, you know, that is going to be a very difficult thing in so many times in our lives. कि देखो self assurance जो है ना कि to tell yourself that yes, I am good at it, I can do it, is very important. Before someone comes and taps on your shoulder and says, hey, very good, Nur, you did a good job, you have to tell yourself I did a good job. Right.
And if you are not learning that to tell yourself that yes, you're doing good, sometimes you may not get the verification from other people, or you may want verification from one particular person, and if that person is busy, could not do it, you would suffer. And that is exactly how the social media has played, unfortunately. It's a very detailed topic on that, how we always want the information of other people. If you did not get 30 likes in an hour, you feel, oh my God, my life is over. Think of this way, some people are only wanting the approval. They're not even liking what they do. For instance, if you are at some place, आप मरी गए हो, आप स्विट्जरलैंड गए हो, कहीं गए हो, you have to put a picture and see कितने लोगों को पता लगा भी मैं वहां गया हूं. अगर इतने लोगों ने like नहीं किया, तो are you going to waste that whole effort to enjoy that place that you went through? So you have to start from yourself, the self-assurance and self-liking. I'm not saying that it becomes a difficult thing if you're only liking yourself in a narcissistic way, but you have to understand that you have to assure yourself how I can get out of this situation. If I am capable of doing it, I should. And that's what would be the first thing to feel good about yourself. Number two, again, I can always reference to the point of faith. Okay, think of this way, that Allah has given us the abilities, the talents, the capacity. हमें नहीं पता होता. और वो जो आप कहते हैं कि question you were asking earlier, कि how I know that मेरा potential क्या है. Think of this way, in COVID-19, in 3 महीनों में, so many of us have found out so many things that we are capable of doing that we never thought of, or we are good at. Make sense? We are able to do so many things, that we said, oh, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था. Oh, मैं तो ये कर सकती हूँ. अब इतने में, I think last time when we were talking, I said that, I love to cook. I've learned so many, I've refined my cooking skills, with my own voice. So that is something that gives me a good feeling कि भाई बाकी काम जो मैं जिंदगी में कर रहा हूँ तो चल रहे हैं, लेकिन this is something that I am good at. I'm refining it. I'm getting better. Exactly. Same thing कि आपने घर में कोई काम करना है, घर में आपने कोई चीज फिक्स कर दी है, आपने अपने किसी आपकी कोई वो है family member है who needs help. जैसे आप घर पे हो गए, let's say if you have someone that आपकी खाला, cousin, someone that who lives alone, उनसे बात करने वाला कोई नहीं. If you regularly call them, उनसे बात कहीं की भी बात करो, ठीक है. मतलब if you are becoming a source of happiness or ease for someone, that will automatically make you feel good. So that is how we talk about the human connection and human relationship, कि आपकी self assurance automatically होनी शुरू हो जाएगी when you try to regenerate that energy in you कि भाई देखो मैं ये कर सकती हूँ. So again, relying always on other people is not going to be, yes, we rely on relationships, we want their validity, information from other people, but you have to be very careful. It starts from within. So reassure yourself when you're doing something good. And once you start getting comfortable on your decisions, what you do, believe me, that is a direct multiplication. Exponentially, your self-esteem will get better. You'll feel happier, stronger, and more productive. Okay. So this was just my last question. I think this kind of really helped me because I had some questions that even some of my friends had, but they couldn't be here. But I think this made me feel better because I can share with them because they're going through some similar stages, because we're all growing up, we're all going through I'm studying in IB, and so we don't have exams till 6th grade, and that was a huge rush. But other kids, they have exams when they're really young, so we went through that together. We're going through other things like that. So I think this was really helpful because I can tell them that everything will be all right. And later on, if we practice these things, it'll be better than what it is right now. अच्छा सर, we have some questions. अगर आपके पास टाइम हो तो हम ऑनलाइन क्वेश्चंस आए हैं, उनको हम इंक्लूड कर लें. हाँ जी, बताइए. अच्छा सर, ये पहला क्वेश्चन है राबिया का. वो आप पूछनी है कि अब ये सारे अडल्ट्स के क्वेश्चन हैं, सो वी आर नॉट स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट यूथ हियर, बट इट्स अ जेनेरिक क्वेश्चन. उसमें पूछ रहे हैं कि हाउ टू कोप अप विद डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ. Different phases. It's a very broad question. Again, especially if you ask about particular situation, then I can be more specifically answer it. But we stages of life here, we all have been through stages, and that's how earlier we were talking about how we learn through the process of growing up. जो आपकी stage है pre-adolescence की, उस वक्त आपकी expectations अपने आप से different होती हैं. उस वक्त
technically at pre-adolescence you do not have much expectations of you. You're just learning, going with the flow of things. उसके बाद जब आप adolescence में आते हैं, the big question of your developmental age के who I'm gonna be, मैं क्या करूँगा, मुझे पता नहीं profession क्या होगा. मेरे साथ वाला जो एक बंदा है उसने decide कर लिया कि भाई वो डॉक्टर बन रहा है, एक law school जाना चाहता है, एक business शुरू करेगा अपने उसका this and that. So there's a lot of turmoil going on in that adolescent that you're trying to figure out what's your next phase of life. So उस वक्त की जो challenges हैं life की वो totally different है, how you can handle it. When you come to young adult life, then it is कि भाई मेरा profession क्या होगा, मैंने relationship में जाना है नहीं जाना, मैंने शादी करनी नहीं करनी, मैंने parents के साथ रहना है, मैंने बाहर move करना है, मुझे क्या मिलेगा, क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है. So उस वक्त के stressors फर्क हैं. That's why the solutions are going to be different. Then you get to later adult age, then you start moving. और ये cycle of life complete होता है, for everyone. कि what you can think at and then adult age or early adulthood or late adulthood is very different, that you can't even imagine it, pre-adolescent, adolescent. Yeah, some people have that aptitude, they can think a little. जिसको maturity कहते हैं. Maturity is basically a process of growing, that you start picking up things. Some people are more mature, they would not be really making certain rational, like irrational decisions, or they would be very respectful of relationships at an early age. Sometimes at the same time there are adults who would not respect people, they would be still doing things. So developmentally जो ages हैं, phases of life की, उसके circumstances फर्क हैं, इसलिए उसके coping skills फर्क हैं. But again, if there's a specific question, then I can definitely elaborate more on it. चलिए, अगर क्वेश्चन आया तो मैं बताऊंगा. सो दूसरा क्वेश्चन ये था जो समथिंग दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग हियर, अभी आपसे कॉल से पहले बात भी हो रही थी. वी आर लिविंग इन अ वेरी डिफरेंट एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम जहाँ पे हर बंदा स्ट्रगल कर रहा है. सो आई वुड लाइक टू इंक्लूड दैट पार्ट एज वेल, बट जेनेरिकली एक हम होता है कि समवन हु इज गोइंग थ्रू सम एन इमोशनल फेज, सो हाउ टू अप्रोच दैट पर्सन. और स्पेशली आजकल के कॉन्टेक्स्ट में जब people are unfortunately losing their loved ones due to COVID a lot of times. So when you reach someone who has lost someone or who is going through an emotional phase, so what are the do's and don'ts? Okay, so if you just to correct and understand clearly, so you're talking about especially about losing someone. No, sir, the question is about going through an emotional phase. Emotional phase उसमें देखें ना, it's again like very broad, expression. Emotional phase अगर especially हो कि भाई किस वजह से कि relationship का कोई problem हुआ है, कि loss because of. Sir, I think sir, जी मैं माजर चाहता हूँ, but I think let's focus on कि अगर आपका recently loss of a loved one हुआ है in this pandemic, so let's narrow down. चल हाँ, that will be easier, and that especially I can tell you this. देखें अब जो grief है, सबसे पहले we have to understand grief before we put the COVID-19 a layer on it. Grief is a natural process. Natural process है कि जो loss है relationship का, that is difficult for a human being to go through. Or that can start from a simple thing. I give you a very simple example कि अगर आपकी कोई favorite shirt है, ठीक है, आपको किसी ने gift किया है या आपने कोई चीज खरीदी है, piece of furniture है, उसको damage हो जाता है, तो you feel bad about it, like आपको बुरा लगता है, आपको अफसोस होता है, आप उसको संभाल के रख रहे थे और कोई चीज टूट गई, ठीक है. So from that simple emotion of even an inanimate object के जिससे आपका relationship नहीं था, उसके loss से इंसान को तकलीफ होती है. When you talk about a relationship, that adds a very high pressure, to go through that emotion. अब उसमें ये आता है कि if you are losing a very close loved one, अगर मैं parents की बात करता हूँ, पहले अल्लाह हम सबके parents को जिंदगी सेहत के साथ भेजती हैं. When you lose a parent, on the back of our mind, when your parents start getting old, आप mentally एक तरह से अगर आप कहीं भी, तो you are a little prepared कि भाई एक time आता है उसको, but still painful, although we know that, right? अगर बेहैसियत मुसलमान आप देखें तो हमें सब पता है कि no one is going to be living forever, लेकिन फिर भी we go through that process. So grief का जो process है उसको understand करना जरूरी इसलिए है कि that is natural, that is not going to be over very short phase of time. कि आपके इतने लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ कि their parents passed away years, 10 years ago, they still feel the pain क्योंकि जब वो बरसी का टाइम आता है ना, those times are very painful. जैसे आपके अपने बच्चे की शादी है, then you remember your parents, so that emotion is always going to be with us. ठीक है, the grieving a process that is always, and it is natural, and that continues for long period of time. Number one. Number two, अब इस situation में जिस तरह हम earlier हम बात कर रहे थे उसकी कि जो losing a someone in COVID-19 is very painful.
पेनफुल इन द सेंस कि जैसे पाकिस्तान में अल्लाह माफ करे वो हुआ जनाब उनका जी बॉडी नहीं दी उन्होंने दी, मतलब कि इट इज सच अ डिफिकल्ट इमोशन. और इफ आई टेल यू ऑनेस्टली सेइंग इट दिस वे कि एज अ साइकियाट्रिस्ट आई बीन डूइंग इट फॉर सो मेनी इयर्स कि ये इतनी डिफिकल्ट इमोशन है इसको प्रोसेस करना कि भाई हाउ आई हैव यू नो माय पेशेंट्स दैट हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट वो नर्सिंग होम में कहीं पे थे या दे वर इन अ डिफरेंट सिटी, ऑल ऑफ अ सडन दे गॉट अ कॉल एंड दे कुड नॉट इवन मैनेज टू गेट देयर बट दे कांट इवन गेट द बॉडी. ठीक है कि आपको जो वो है उसमें बात आती है फिर क्लोजर की. जो क्लोजर है ना जब लॉस ऑफ रिलेशनशिप का दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है अब इस तरह अल्लाह माफ करे सब किसी के पेरेंट की डेथ हुई है एंड यू कुड नेवर गेट देयर इन टाइम. जिससे हमारा मतलब वैसे मुसलमान होता है कि जनाजे का टाइम है उसमें, तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू गो थ्रू. ठीक है अब लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो चीज आती है ना, आई विल अगेन रेफरेंस टू दैट ओनली वे जो अभी तक मैं आई कैन मेक सेंस ऑफ इट कि हैविंग दैट सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस दैट दिस इज हाउ अल्लाह डिसाइडेड. And I always say, even यहाँ पे भी जो मेरे जो हैं जो मतलब patients who are going through that times, you know, it is difficult to even find out words to tell them कि भाई it's okay, it's not okay, but you know you feel so much of guilt कि भाई मैंने ये क्यों किया, मैं इतनी दूर क्यों था, मैं क्यों नहीं पहुंच सका, ये क्यों नहीं, गुस्सा है उसमें आपका you know anger है उसमें आपका guilt है. There's such a very mixed emotion कि उसको process करना. Hopefully like inshallah you know again as is like my job is to think and find out the ways to understand that emotion, so I will be having a better way to explain it to people. But I can tell you to this point jo abhi over 3 months is tarah what I've seen people losing loved one, it is a very difficult and painful. So what you do is that you really accept it, make the dua for the person who has left, you know, may Allah make their you know afterward life easier, kyunki hum apne capacity mein jo kar sakte the humne kiya. This was something that was not someone's mistake or someone's decision by choice. ठीक है ना, तो that is the only way that अपनी human emotion को control कर सकते हैं कि भाई मैं इस चीज को grieving तो होगी, but how you gonna let go of it, you know, you need to process it well. Because a lot of times ये भी होता है कि फिर वो एक I don't know self guilt आ जाता है कि I should have been there, I failed my parent or my loved one because I was not able to come. और उसमें आपका कोई कसूर नहीं है because you know that's how things were. अब फ्लाइट नहीं आ रही थी तो you were not going to come in any case. लेकिन वो एक अपने ऊपर आई थिंक वो एक सिचुएशन या जज्बा ऐसा तारी हो जाता है कि उसमें फिर अपने आप को ब्लेम करते हैं. That's what I'm saying, it's a difficult emotion. लेकिन उसमें फिर अभी देखें ना कि अल्लाह की रजा के अगेंस्ट नाउज़ुबिल्लाह तो हम नहीं जा सकते. ठीक है अब अगर ये COVID-19 हुआ है and that is changed not one person, one particular area, खिते की मसला नहीं, पूरी दुनिया इतने बिलियन इंसान एक ही इमोशन से गुजर रहे हैं and they are again like you know we are talking about for a particular person's you know loss of a parent or so, but this is happening, you know, इतनी अल्लाह माफ करे इतनी अमवात हुई हैं, so all people are going through that right now. Sir, 2 more questions before I take your leave. Sir, एक क्वेश्चन ये था कि इंटरेस्टिंग उसमें ये आ रहे हैं कि अगर एक बंदा अवेयर है अपने ट्रिगर्स को लेके और अपने स्ट्रगल्स को लेके अपनी एंजाइटी को लेके, सो एट व्हाट पॉइंट डू यू डिसाइड कि अच्छा मुझे अब जाके किसी प्रोफेशनल काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत है और कब तक मैं उसको सेल्फ मैनेज कर सकता हूँ? उसमें इस तरह आता है कि इस एंजाइटी की हम बात कर रहे थे आज अर्लियर कि जो अगर आपके कोई ट्रिगर्स हैं जो आप मैनेज कर सकते हैं इन द सेंस के इट डज नॉट अफेक्ट योर इनर सेल्फ, आपका इंट्रा पर्सनल, आपकी अपने साथ अपना रिलेशनशिप एज ए इंडिविजुअल, आपके रिलेशनशिप विद अदर पीपल, आपकी जॉब, आपकी सोशल रिलेशनशिप्स, क्योंकि देखो ना उसमें ये चीजें सारी आती हैं कि अगर ये चीजें अफेक्ट होनी शुरू होगी इसका मतलब है थिंग्स आर वे बिकमिंग डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज योरसेल्फ एंड दे बिकमिंग मोर पैथोलॉजिकल. तो ये उसी तरह की जैसा देखें, अगर आपको मैं एग्जांपल देता हूँ सिंपल के अगर आपको थोड़ी सी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है इसलिए कि आप यू नॉट कंडीशन, आप एक्सरसाइज नहीं करते रेगुलरली और आप थोड़ा सा चलते हैं आपको होते हैं, आप एक्सरसाइज करना शुरू करें, अपनी डाइट का ध्यान रखें, वेल एंड गुड, लेकिन आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इतनी बढ़ती जा रही है कि आपको खड़े होते हैं तो आपको सांस चढ़ जाता है, आप 2 कदम चलते हैं. It's not something that you should keep on ignoring. You should definitely find out, you know, referral to find out to be something is not right. So I would say do not wait till other people start really avoiding you or your relationships get affected, आपकी job affect हो जाए, आपकी sleep affect हो, it's better to seek help, not to wait too long. ठीक है. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है सर. सना ने हमसे पूछा है, बेसिकली वो पूछना चाह रही हैं कि जो लॉसेस हैं उनके ऑफ लव्ड वंस इन पास्ट वो उनको ट्रिगर करते हैं. फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली उनके फादर्स की डेथ,
तो हाउ कैन शी मैनेज दीज ट्रिगर्स, या इन ट्रिगर्स को वो कैसे हैंडल कर सकती हैं? Yeah, but I'm not sure, like, do you know how long it was recently in this COVID-19 or? सर इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट Sir, उन्होंने ये let me सर उन्होंने ये जरूर मेंशन किया है कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था आई वाज डूइंग वेल, बट नाउ तो इट मींस आई एम assuming that she's talking about COVID specifically. Talking about, okay, I was going to answer because वो तो हमने उस बारे में बात कर ली जो अभी जी, अगर हुआ है, लेकिन again understanding how the mind, how the brain format is and how the mind processes trauma. अब होता ही है कि कोई चीज from the past, maybe again like losing a loved one, it was 5 years ago, 10 years ago, maybe longer than that, लेकिन जब आपकी लाइफ में present कोई trauma होता है और कोई incident होता है, it opens up everything from the past very quickly. It's the same thing. I usually give a very concrete example, like most of people use a computer. अगर आप computer पे काम कर रहे हैं और आपकी word file है जिसमें थोड़ी सी कोई गड़बड़ हुई है, वायरस की वजह से कुछ हुआ है, तो it will start opening up all the word files, ठीक है? और वो यूजुअली अब नए वर्ड में वो आपसे पूछता भी है माइक्रोसॉफ्ट में कि डू यू वांट टू डिलीट दोस फाइल्स, ठीक है? तो वो होती है कि फाइल इज ऑलवेज गोना बी देयर, इट इज देयर इन दैट मेमोरी बॉक्स. प्रेजेंट में जब कुछ चीजें शेयर करती हैं, दे आर ऑल ऑन द सेम वेवलेंथ, दे कम बैक, ठीक है? दैट्स वन एक्सप्लेनेशन. दूसरी चीज ये होती है कि नाउ व्हाट कोविड-19 हैज डन टू अस इज वी फील सो आइसोलेटेड, सो ओवरवेल्म्ड. हमारी सबकी anxiety has skyrocketed. It has jumped for all reasons. For everyone may be different, but everyone's anxiety is way above than the normal threshold. ठीक है? उसमें you need to be cared, you need to be held, you need to be taken care of. So उसमें आपका जो solid और आपका strong relationship था which you have lost makes you feel more about it, that you miss someone that you were very close to and who was very nurturing, who was very caring to you. So that is another way that you can understand why it's happening now. ठीक है सर. एक और क्वेश्चन अभी आपकी बात से याद आया था. I often read articles different. Can memories be erased, or you learn to live with them, और आप उनको rewrite कर लेते हैं? How does this work actually? No, memories को आप erase नहीं कर सकते, number one. अगर आप मतलब उसमें उस context से बात करें, और rewrite तो memory को आप नहीं कर सकते, ठीक है? You can relive the memory, you cannot rewrite it, ठीक है? अब उसमें different है कि अब एक concept है which is kind of very debatable about repressed memories. Repressed memories के give an example कि जिस वक्त explaining it, जब neural tube बनती है, जिस वक्त brain formation, जिस वक्त at the point of conception, then the brain की formation होती है for the first time before even the fetus is in the womb of mom, कि उस वक्त brain starts processing. It's a hard drive that starts storing every single millisecond of our lives, every millisecond, ठीक है? From the point of conception, जब वो brain form होता है, till the end of the day, ठीक है? तो उसमें अब ये आता है कि memories are always there. Sometimes we can retrieve those memories, sometimes we can't. क्योंकि memory को retrieve करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होती है language, आपको चाहिए होती है word to express that, ठीक है? So for instance, if you ask me कि वहाँ पे मौसम कैसा है, मैं कहूँ यार जबरदस्त ग्रीन है और घास इतना खूबसूरत लग रहा है, आसमान नीला है. When I say blue, आपका blue may be darker blue, आपको आसमान से डार्क ब्लू अच्छा लगता हो, मैं लाइट की बात कर रहा हूँ, लेकिन वी आर एबल टू रिलेट दैट, ठीक है? तो मैं अपनी मेमोरी से भी आपको चीज बता रहा हूँ जो आप अपनी मेमोरी से रिलेट करके यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, राइट? लेकिन अब बाज मेमोरीज हैं जो कि हम याद नहीं कर सकते क्योंकि हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट थी. इसलिए हाउ वी नो अबाउट दिस होल थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि जो बच्चे हैं बिफोर ईयर 1, even giving you a little more complication on understanding of that is even when we do the fetal psychiatry is के pregnant moms who have been through abused relationships और काफी उनकी abusive होती, so you work with that mom, you monitor their babies के parameters, क्योंकि baby का heart rate कैसा है, माँ का heart rate कैसा है. So we know that even at that time the memories are being formed but cannot be retrieved because language development नहीं होती. अब जिस तरह 1 साल से कम का बच्चे को अगर आप तरह से कोई अब्यूज हो किसी किस्म की, तो उसके बिहेवियर से आपको पता लग जाता है कि उसको अब्यूज हुई है, बट दैट बेबी कैन नॉट रियली ग्रो अप एंड टेल यू एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, ठीक है? लेकिन लेटर इन द लाइफ इफ समथिंग प्रेजेंट में होगी दैट ब्रिंग्स अप दैट ऑल ऑफ अ सडन यू फाइंड आउट अ वर्ड टू से ओ माय गॉड मेरे साथ ये भी हुआ है, ठीक है? तो इसमें जो है ना, मेमोरी इज ऑलवेज गोना बी देयर, यू कैन नॉट erase it. Yes, you can relive it,
गुड और बैड मेमोरी, और उसमें फिर जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जिस तरह अल्लाह मियां ने फॉर्मेट किया ब्रेन को कि वी डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट समथिंग पेनफुल, ठीक है। अगर आपसे पूछें यार नथिया गली का ट्रिप कैसा था, यू वुड डिस्क्राइब कि जबरदस्त था, मैं उधर गया, हमारी जीप फंस गई, यू वुड डिस्क्राइब एक्साइटिंग थिंग्स अबाउट अ मेमोरी फ्रॉम मेमोरी, बट नॉट एनीथिंग पेनफुल, ठीक है। नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट कि जब मैं एग्जाम में फेल हुआ तो कितने जबरदस्त फीलिंग थी होती। सो वी टॉक, दैट्स अ नेचुरल थिंग, क्योंकि वी वांट टू रियली री एक्सपीरियंस गुड थिंग्स। सर आई थिंक हमने आपका बहुत टाइम ले लिया, बट थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया एंड इट वाज डेफिनेटली अ लॉट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आई एम श्योर जो हमारा अल्टीमेट गोल था वो नूर वाज रियली ब्रेव टू आस्क ऑल दीस क्वेश्चंस व्हाइल शी न्यू दैट शी इज लाइव एंड लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग। अब so big shout out to her as well, and sir once again thank you for joining and stay safe and so nice, stay blessed. Pleasure, stay blessed. Okay, thank you inshallah. sir, thank you sir, thank you. Allah Hafiz.